how frequently should you be screened? So वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से कैंसर को कितना जल्दी हमें डिटेक्ट करना है, या फिर कितना जल्दी हमें स्क्रीनिंग की टेस्ट करनी है. देयर आर टू थिंग्स दैट वी सी. नंबर वन इज द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, कि दो टेस्ट के बीच में कितना समय है कि डिजीज जो है एक स्टेज क्रॉस ऐसा कर जाएगी कि वो ट्रीटमेंट इसका मुश्किल होगा. सपोज देयर इज अ कैंसर दैट जो बहुत जल्दी फैलता है, तो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट भी और फ्रीक्वेंटली होंगे. एंड इफ देयर इज अ कैंसर जो बहुत जिसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन बहुत कम है, तो इस कैंसर के लिए दो स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो दूर दूर होंगे. ठीक है. And then the sensitivity of the screening test is another thing that needs to be taken into account before deciding how frequently you should be screened. So cervical cancer, इसमें दो टेस्ट होते हैं. देयर इज एन HPV टेस्ट एंड अ पैप टेस्ट. एवरी 5 years इट हैज टू बी डन. एंड या फिर आप सिर्फ एक पैप टेस्ट अगर करा रहे हैं तो हर 3 साल में आपको ये कराना है. सो सर्वाइकल कैंसर, अगर आप दोनों टेस्ट एक साथ करा रहे हैं तो हर 5 साल, और अगर एक ही करा रहे हैं तो हर 3 साल आपको ये कराना है. कोलोरेक्टल कैंसर, इसकी देयर आर सम स्टूल बेस्ड टेस्ट which is the fecal immunochemical test. This is a little expensive. ये हर साल आपको कराना होता है. Then you have a GFOBT test. This is also a stool based test. So if you have a very high risk of colorectal cancer, then you might get this one done every year as well. एक DNA टेस्ट होता है. I won't recommend that. That is done every 3 years. कोलोनोस्कोपी जो है ये हर 10 साल करानी होती है आफ्टर द एज ऑफ 45. Every 10 years you must get the colonoscopy done. CT कोलोनोग्राफी होती है जो हर 5 साल में करा सकते हैं, और फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी होती है जो हर 5 साल आपको करानी पड़ती है. So this is how frequently you should get these tests done. So the most important here is colonoscopy every 10 years. So healthy lifestyle choices for everyone. I'll discuss this at the end. So I don't have any symptoms. Do I need to still get tested? Do I still need to get screened? The answer is that yes, because screening typically and by definition वो लोग कराते हैं जिनको कोई symptoms नहीं होते. So do I need to get screened? Yes. जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वो सब टेस्ट आपको फ्रीक्वेंटली कराने हैं. बाकी जो टेस्ट हैं उनकी जो स्क्रीनिंग, बाकी जो कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग इज नॉट वेरी सेंसिटिव, या फिर इतना फ्रीक्वेंटली हम नहीं कराते. दिस वुड बी डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हिस्ट्री टू हिस्ट्री. सो यू डिस्कस विद योर फैमिली फिजिशियन कि कौन कौन से आपको कैंसर की स्क्रीनिंग आपको करानी है. I'm not sure where I can get a screening test. How do I find out where to go? So firstly, your doctor will recommend कि आपको कहाँ करवाना चाहिए. इसके अलावा जो भी आप suppose it is colorectal cancer, so you can just see कि आपके जो पास में हॉस्पिटल है उसमें कोई GI का डिपार्टमेंट है कि नहीं. अगर है तो 101% there would be a facility to get the screening test done. So it's best to go uh, to that hospital and get it done. So let's say breast cancer. So this mammography जो है, most of the places जहाँ पे imaging studies होती हैं वहाँ पे you will be able to get it done. So that's about the location कहाँ करवाना है. I'm overdue for screening because of the pandemic. Is it safe to get screened? I think now the pandemic is हम कह सकते हैं कि we are done and dusted with it. Most likely we are done and dusted with the pandemic, and it is safe at the moment to get yourself screened. Just make sure that you follow all the precautionary measures. So is there an upper age limit for getting the colon cancer screening done? So officially speaking, yes, you still need to get screened every 10 years.
But after a particular age, if you have a lot of risk factors, then your doctors might ask you to get a visual one, depending on the patient. So there are some patients who have been asked to get the visual स्क्रीनिंग टेस्ट डन आफ्टर इन पर्टिकुलर एज, क्योंकि उनको ब्लीडिंग की रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है. सो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट you should be getting full on cancer screening done every 10 years after the age of 45. How is early cancer detected? So there are two ways of detecting early cancer. एक तो early diagnosis होती है, जिन लोगों को symptoms आते हैं, they need to get the diagnostic test done as soon as possible. जैसे ही symptoms आते हैं, so there are few of the symptoms of cancer that are very um, uh, टिपिकल, जैसे कि आप मलेज है, लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ एपेटाइट है. दीज थिंग्स आर वेरी जेनेरिक एंड इट्स डिफिकल्ट टू से एट दिस एज. बट इस तरह के अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट इफ यू आर लूजिंग, then you need to be worried and you need to see what is going on. So ये screening test जो हैं, they are the second method जिससे हम early cancer detect कर सकते हैं. This is done on healthy individuals, जैसे मैंने आपको बताया, and this is what is recommended. So before you have the symptoms itself, you should be getting the screening test done. अगर हम कैंसर के लिए सबसे कॉमन टेस्ट पूछें तो दैट वुड बी अ बायोप्सी. जैसे ही सिम्टम्स आते हैं और लोकलाइज हो जाता है कि दिस इज द particular organ that is involved, हम लोग उसका बायोप्सी करवाते हैं and we get to see some information regarding the cancer in that. So एक ही organ में अलग अलग तरह के cancers हो सकते हैं, not at the same time of course, but there are a lot of possibilities. So getting a biopsy done will give us a lot of idea about the treatment, about the how to get rid of it, and about the prognosis as well. मतलब कि उससे कितना जल्दी उससे कोई ठीक हो सकता है. That also will be told to us by the biopsy. So once you have cancer, then a biopsy is the next step. क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन पर डिपेंड हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? प्लीज रिप्लाई. विदाउट कीमोथेरेपी डिपेंड्स ओनली ऑन आयुर्वेदिक. See, there are certain kind of breast cancers that spread very fast, and they can involve other organs as well. So if your ayurvedic medicine is not going to work very fast, I'm not very sure about how कौन सा मेथड इसमें यूज होता है, कौन से मैकेनिज्म से आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर ठीक करती है. सो आई डोंट वांट टू dismiss any sort of medical field on this platform, but अगर समय लगाएगी आपकी दवा तो that is not a very good option in cancer, because ये अगर फैल गया दूसरे organs में, then it will be very difficult to treat even for allopathy or for the other streams of medicine. So you speak to your doctor, can it be treated with your Ayurvedic medicines? So that's all from us today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another